इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से खुश आमदीद कहेंगे। Asif Yaqub is now with Riazuddin. With Sami Aslam. In previous two games, Tariq, they have provided really good start to their team. But different story today. They are chasing today. In the previous two games, they were batting first. Then things were in favor of altogether. It's going to be a different challenge. Khurram Manzoor, 30 years old, and almost 5,000 list A runs. A strike rate pretty good, 0.83, and average very good indeed, 48.91. And at the start of his career, 41 matches, and average of 52.08, and a strike rate of 85. These two open the. They know the task ahead to score 320 runs. Ziaul Haq to open the bowling for KPK. 57 wickets so far for the youngster in 37 matches. Two slips in place for Ziaul Haq. 3 men on the side inside the circle. Only 3 men on the onside. Straight away, Khurram Manzoor off the mark. He's in very good forms. Scored 2 centuries in previous 2 outings for Sindh. Sindh, of course, need a big him, and he not only has the appetite but also the ability to score quickly. And Khurram under some pressure, facing up to Samin. And a simple catch, he's gone. And first breakthrough, and that was a timid sort of a stroke. He wasn't to the pitch of it and hit it in the air. Khurram wasn't comfortable out there, and this was a stroke in frustration. He's not happy with the reaction of the bowler. He has few words to say to Khurram Manzoor, taking his wicket. Samin go, and Khurram Manzoor not really happy. But he has to blame himself for that stroke. It was never there. In the previous game, we saw him. He was taking his time. First 5 to 6 overs. 3 for 1. Khurram Manzoor out, and didn't last very long. He was dropped. A sharp chance behind the wicket, and Khalid Latif is now coming in at the 1-drop position. 91 matches, average of 46.04, and a strike rate just below 90. Samin Gul is the bowler, and that should be 4 runs. Nice stroke, and hit it powerfully down to wide mid-on. Yeah, good pickup stroke from Sami Aslam, shuffling across the stump, taking that delivery from outside the off stump over mid-wicket. So first boundary for Sami Aslam. It was a length delivery. And there could be a run out, and the batsman doesn't move, and the non-striker had joined him, and that is a very rude shot for Sindh. Well, both standing in the same end. The ball was going behind square, so it was Sami Aslam's call, but Khalid Latif was looking at the ball. He never responded to Sami Aslam, and he was never interested. Very unlucky for Sami Aslam. He has to depart. 15 for 2. Sami Aslam run out for 7, and well, complete misunderstanding between the two, and they are reduced to 13 for the loss of 2 left over. And Sohaib is the new batsman, Sohaib Maqsood. 72 matches, 29 years old. Pull away. That should run away for a boundary in his zone. Khalid Latif very strong in that mid-wicket area. Anything short, and he will go to you.
And I think they need more of those strokes. Very well picked up, hit it on the up and went very quickly to the boundary. Watch Khalid just pick it up and heave it down to the mid-on boundary. 1, 2, 3, 4 bounces. Zaul Haq was looking for that extra bounce which wasn't there on that occasion. Again, pulled again. Didn't really mill that one. That was almost the shoulder of the bat, but luckily it landed safely for. Yes, we've got two fielders, one at short fine leg, the other at square leg, and dangerous thing to attempt. And this time he's gone. So the plan has worked from Zaul Haq. And yet another time we are seeing Sohaib Maqsood getting out of a short delivery. So it's a delighted KPK side. They've done very well with the bat and now making things difficult. That was short, lifting. He was in no position to play that hook stroke and just edged it and well caught by Bismillah Khan. A well-directed bouncer from Zaul Haq. Who walks out into the middle. 31 years old, plenty of nearly 5,000 runs, strike rate of 82 and average, and two fielders for a possible lofted drive. And that was beautifully struck. Past the bowler on the onside, running away to the long on boundary, and that's a super shot by Khalid Latif. And I think his team would require these sort of strokes. Half volley just around that off stump. Full face of the bat from Khalid Latif. Powerfully struck. और इस बार बाउंड्री हासिल होगी यहाँ पर। खालिद बड़ा ही कॉन्फिडेंट शॉट यहाँ पर खेले हैं। किसी फील्डर का मौका नहीं था कि इस गेंद को रोक सकता। बहुत दूर गेंद फील्डर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। खालिद लतीफ के स्ट्रॉन्ग फोर आर्म और अपने राइट हैंड का बॉटम हैंड का जबरदस्त मुजाहरा। इस बार ऊंचा शॉट खेले हैं और गेंद हवा में लेकिन फील्डर से दूर है। सेफ शॉट यहां पर खालिद लतीफ खेले और 2 रन यहां पर हासिल किए। तो 38 पर 3 सिंध का स्कोर 10 ओवर के इख्तिताम पर। आपको फॉरेन फील्ड बदलना होती है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कोशिश की गेंद को रोकते, लेकिन बहुत दूर थी गेंद और 6 रन के लिए बाहर गई है। तो यहां पर बड़े कीमती सिंध को खालिद लतीफ की बदौलत। जी एक बहुत ही जोरदार शॉट, फ्लैट शॉट खेली खालिद लतीफ ने। प्रोबेबली वो एलिवेशन जो चाहते थे वो हासिल ना कर सके और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने भागकर कैच करने की कोशिश की मगर उनकी पांव से दूर था और एक बहुत ही फ्लैट स्ट्रोक खेलकर। Short ball, played it towards mid-wicket. Beautiful shot this time. He got that gap deep in mid-wicket area. Beautiful shot. It was pitch short. Gave enough time to Fawad Alam, who has opened up with this beautiful shot for 4 runs. He dragged it from just a bit outside the off stump and found the gap. He was eyeing that gap. This one is swept away, going down to the boundary. 4 runs. That kept a bit low, but Khalid Latif anticipated that, moved into perfect position, and then half swept, half pulled it down to the long leg boundary for 4 runs. Bad delivery. It was on the leg stump short. There was no deep square leg fielder because most of the fielders were placed on the offside, and he paid the penalty. And what a good shot! But mind you, these two. That should be kept in mind by the Sindh batsman. Out he comes, and the ball bounces away merrily down to the long on boundary for 4. Required run rate just slipping a bit. 19 overs gone, and the
beginning of the 20th over. 2:48 still required. Fuad Alam and Khalid Latif in possession of the wicket at the moment, or in occupation of the wicket, as I Swept and got come back for the second. Both the batsmen are experienced enough to know the asking rate, and they can step up once they get settled. turned away by Khalid Latif down to deep square leg. That's a no ball, another no ball. Come on, Fahim. I think Ahmed Shahzad will go and have a word with him. Word of encouragement, word of calming him down. Look, he's saying, well, why can't you see where the line is? Yes, there is Ahmed Shahzad. He isn't very upset. He's just a bit concerned. Yes, that was a no ball. No problem on that one. And of course, talking of the twins, the most famous of them were the Betzer twins, Alec Betzer and Eric Betzer of Surrey in England. That's a lovely stroke. Beautiful shot by Fuad Alam. He made room for himself to play that shot, waited for it, and then cut it ferociously, timed it well. A very elegant looking stroke from Fuad Alam, going down to the boundary for 4. There it is. Bended knee. The ball is speeding away to the boundary for 4. This time he bowled outside the off stump and paid the penalty because there was no fielder covering. KPK would be looking to get the breakthrough. He especially to deep square leg and misfielded. Sloppy fielding at the deep square leg position. Conceded 4 runs. Asghar would not be happy to see that. The fielder, I think, deceived by the spin of the ball. Once it pitches, it also... ना पाकिस्तान क्वालिफाई करता अगले मरहले के लिए। इस मरहले खालिद ने ज़ियाउल हक फील्डर 1 रन का इजाफा। अब दोनों एंड से लेफ्ट हैंड 50 रन किए खालिद ने, दूसरा 50 है इनका इस टूर्नामेंट में, और दोनों एंड से अब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लगे हुए। एक बैट्समैन जो कि जिसको थोड़ा सा इजी हो, बॉल हो रही हो जिसको, जैसे फवाद आलम है, थोड़ा सा पेस बढ़ाना पड़ेगा अब, क्योंकि एवरेज हल्के हल्के बढ़ता हुआ, तो यहाँ से 9.11 का अभी रन रेट रिक्वायर्ड है, तो फवाद को बड़ी हिट खेलनी पड़ेगी। मिड विकेट का एरिया काफ़ी है, अच्छा खेलते हैं ये। जी हाँ, और इस मर्तबा कोशिश की फवाद आलम ने 4 रन हासिल किए। तो राशिद, यकीनन आपका एक्सपीरियंस फवाद आलम तक जरूर पहुंचा होगा। 4 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। फवाद ने थोड़ा सा अपने पाँव निकाल, गिर गई उनसे, ये थोड़ा झपकी दी एक तरह से, बॉल पीछे गिरी, अच्छा यूटिलाइज किया और गैप में सिर्फ टाइम किया और 4 रन के लिए बाहर। अब कट के लिए तैयार होना चाहिए। वैसे उठा के खेले फवाद आलम, इस मर्तबा लॉक किया और क्या शानदार अंदाज से अपनी मुकम्मल की फवाद आलम ने 6 रन। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट खेला है फवाद ने, यूटिलाइज किया अपनी बैटिंग को, अपने स्ट्रेंथ जो इनकी स्ट्रेंथ है उस पर खेल रही है। मिड ऑन और मिड विकेट के एरिया में काफ़ी अच्छा खेलते हैं। मेरा मानना ये था कि बॉलर अब कट की बॉल ज़रूर देगा, क्योंकि मिड विकेट लगी है तो उसके लिए रेडी होना चाहिए, लेकिन अपने कदमों का इस्तेमाल किया तेज़ी से। ये देखें आप, कदमों का इस्तेमाल करके मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में बॉल को फेंक दिया और रन रेट को थोड़ा बहुत बढ़ाते हुए केपीके से मतलब एबटाबाद से खेलते हैं। इस दौरान उठा के खेले खालिद लतीफ अपने मखसूस अंदाज में 6 रन के लिए, फ्लैग बॉल छक्का और रियाजुद्दीन की जानिब से 6 रन का सिग्नल। खालिद ने भी, जैसे फवाद आलम ने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था, खालिद लतीफ़ ने भी अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया
और मिड विकेट पे बॉटम हैंड को यूज़ करते हुए एक छक्का उन्होंने मारा। और ये देखना है कि कब गेंद स्टेडियम से बाहर जाएगी। और इस मरतबा ऑन पे खेले, 4 रन हासिल करेंगे। तालम पाव पे गेंद की और इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ा फहीम अशरफ को। इसको मैं बोलूँगा बॉलर की मिस्टेक है, क्योंकि उनको पता है कि फाइन लेग ऊपर है और फवाद आलम जो कि अपनी लेग पे बहुत ही स्ट्रांग है और इन्होंने बॉल बहुत ही मतलब फीट की एक तरह से बॉल। लकी भी में नहीं गई, लेकिन ये है कि यहाँ पे 2 चौके एक लग चुके हैं। खालिद ने अपने फुल टॉस गेंद, इसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज किया खालिद लतीफ इन एक्शन। 6 रन। फ्लैट 6 है खालिद का। मेरे ख्याल से बॉल हाथ से स्लिप की है और मतलब ये बोनस मिला है सिंध को। 150 रन भी मुकम्मल हुए छक्के के साथ ही। और ये बॉल हाथ से मेरे ख्याल से स्लिप हुई है। ये नो बॉल भी लग रही है, नो बॉल है, लेकिन ये देखना पड़ेगा। एम्पायर को कॉल करनी चाहिए थी क्योंकि वाइटल हो जाती है। एक भी एरर ना, एक खुशाइन चीज़ है उनकी। उन्होंने टीम बिल्ड की है केपीके की। एक और उठता हुआ स्ट्रोक लॉफ्ट किया इस मरतबा खालिद लतीफ ने और तमाशाई भरपूर अंदाज से महसूस होते हुए इस ओवर के दौरान खालिद लतीफ की बैटिंग से। मेरे ख्याल से अननेसेसरी छक्का है ये खालिद का। ये चांस एक छक्का लग चुका है तो अब खुद ट्राई किए ना। और ये बहुत स्ट्रांग इनका एरिया है, लेकिन यहीं पे आउट हो सकते हैं। कोशिश के बावजूद फील्डर गेंद को नहीं रोक सके और गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब। 4 रन के लिए लकी बाउंड्री हासिल की खालिद लतीफ ने। बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं, हल्का सा टाइम किया है सिर्फ। यहाँ पे जहाँ पे पार्टनरशिप लगती है वहाँ मिस्टेक करते हैं। बॉलर को चेंज किया है, यहाँ पे राउंड द स्टंप बॉल करने के लिए आए। टर्न मिलेगा नहीं इनको यहाँ से और बैट्समैन सेट है। जहाँ पे बुरी बॉल गिरेगी ये बाउंड्री मारेंगे। और इस मरतबा खालिद लतीफ अपने मखसूस अंदाज में स्वीप करने में कामयाब। बैक टू बैक बाउंड्रीज खालिद लतीफ के लिए। खालिद लतीफ स्पेशल। स्ट्रॉन्ग एरिया में बॉल कर रहे हैं, बहुत तेज बॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। मिडिल लेग से भी बाहर बॉल फेंक रहे हैं और जो भी स्वीप होगी वो का होगा। अगर ये हटेंगे और मिडिल स्टंप से आएंगे या ऑफ स्टंप के बाहर आएंगे तो कट पे चांस है। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा अहमद शहजाद को। अब एक और स्वीप, लेकिन इस मरतबा फील्डर गेंद तक पहुंच जाएंगे और अच्छी आसानी के साथ फील्डिंग की यहाँ पे यासिर ने। 1 रन का इजाफा। तो में अब तक 10 रन स्कोर किए जा चुके। 5 गेंदें डिलीवर की हैं आदिल अमीन ने। क्योंकि क्लियर प्लान नजर आ रहा है सबीन गुल की जानिब से कि वो यही इसी लाइन पे अटैक करेंगे। इस दफा ओवर मिड ऑन खेले, चांस है फील्डर के पास और फवाद आलम की विकेट मिल गई खैबर पख्तूनख्वा को और एकदम से मैच में वापस आ गई है खैबर पख्तूनख्वा की टीम। बहुत ही अच्छा कैच लिया फखर जमान ने। आज जख्मी हो गए थे कुछ देर पहले, लेकिन जब से वापस आए हैं फील्डिंग में वो आपको हर तरफ नजर आ रहे हैं। और ये देखिए कतरे स्लो डिलीवरी थी, इसलिए शॉट बाउंड्री के बाहर नहीं जा सका और इत्मीनान के साथ इस गेंद को आने दिया, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखा। उनकी जगह लेने के लिए ग्राउंड में आ रहे हैं। बिल्कुल स्वीप पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था खालिद लतीफ के लिए और इस शॉट के ऊपर उन्होंने काफ़ी रन्स बनाए हैं इस इनिंग में। अहमद शहजाद को मैं भी सोचना होगा अपनी फील्ड प्लेसमेंट को यहाँ पे कि मैं भी आ रहे थे बैट्समैन। और ये रही इंतहाई शानदार सेंचुरी खालिद लतीफ की। उनकी बैटिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। फातिहाना अंदाज में उन्होंने अपना बल्ला फाजा में बुलंद किया, तमाशाइयों की दादो तहसीन का जवाब दिया। वो खेलते रहे और अब तक मर्द बहरान का किरदार। और स्टंप आउट की अपील और खुद ही चल दिए खालिद लतीफ अंपायर का इशारा देखे बगैर, बल्कि ये सरफराज अहमद हैं। इस एंगल से हमें पता चलेगा कि कैसे वो अप स्ट्राइड लंबी ले गए। तो तारिक खालिद लतीफ के लिए राशिद लतीफ का अच्छा साइन है, लेकिन सरफराज के लिए नहीं। कोर्स बिलाल आसिफ ने बैट्समैन आज जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की
फ्लैट सिक्स पिक किया ऑफ स्टंप के बाहर से इस दफा खालिद लतीफ ने वेरी स्ट्रॉन्ग बॉटम एंड प्लेयर है और इस दफा पूरा फायदा उठाया लेंथ मिली उनको ज़ुएब खान की जानिब से शॉर्ट बाउंड्री की जानिब उन्होंने फ्लैट छक्का मारा तो काफ़ी डिपेंड करेगी सिंध की टीम खालिद लतीफ के कि वो अपना यहाँ पे जो उनका चल रहा है पहले से उसको वो फर्दर कैरी करें इस बार लेग ब्रेक की और पुल कर दिया खालिद लतीफ ने 4 रन्स बड़ी जल्दी गेंद की रफ्तार को रीड कर लिया था और लेंथ को भी बहुत बड़ा गैप नहीं था मिड विकेट के दरमियान फायदा उठाया बैक ऑफ द हैंड बॉल को उन्होंने रिलीज किया था लेकिन लेंथ बहुत पीछे थी उठता हुआ शॉट और गेंद बाउंड्री को क्लियर तो नहीं कर सकी 2-3 टिपक आती हुई ये बाउंड्री पार कर गई Fit person. This is where the last ball when he hit over the mid off area, Bilal Asif got that boundary. He fielded 50 overs. Bilal Asif in the meantime facing up to Yasir. He's got him in the air and gone all the way to the boundary for 6 more runs for Sindh. So I think the game is on, as they say. At the moment we have a game here because that is what they needed, the wicket of Bilal Asif or Khalid Latif, so they got Bilal Asif and probably that message failed. well, that could have been the message that come on, get out and come back, we'll send someone else. No, I'm just being facetious here. Oh yes, see, inside edge, bails are off in this humidity. Really, the heat is gone. Bilal Asif bowled Ziaul Haq for 21. He had 1 sixer, 1 4. Local games and he can hit the ball. Look at the strike rate, 70 point. Way and that goes bouncing merrily over the rope for 4 runs. That's a lapse on the part of the fielder. We'll have to watch the replay there. You normally don't expect this to happen. The last dying moments of the game where you need to protect these boundaries. That is why you were stationed there. In the air. Who's going to get it? Somebody in the crowd. 6 runs. First ball 6. Now that really puts the cat among the pigeons. So There probably this time to bowling around the wicket. He came down the track, Sohail Khan. As I told you earlier, he hits the ball very hard. Straight to mid-on for a single to end the over. He will keep the strike. 48 overs gone. 286 for 6, and this is 150. What an innings. Khalid Latif played a brilliant knock here. So why don't you move outside the off stump? And he came down the track straight over the bowler's head for a 6. Beautiful shot. Beautiful shot. In fact, that's what the other Latif whom we have in our commentary box, Rashid Latif, by the way, who's not related to Khalid Latif, he suggested from here that he should stand out. What a huge 6. He came outside the off stump and saw that ball pitching up. He played it over mid-wicket and it is out of the park. No, it's not out of the park, it's out of the stadium. It's on its way to the clock tower. It's gone to Ghanta Ghar. Such a powerful hitter this Khalid Latif is. Can he emulate Khalid Latif and hit a sixer? He's done that absolutely marvelously over long on. 6 more runs to Sindh and 6 more to Sohail Khan. What a determined young man Sohail Khan is looking there. In fact, he's telling Khalid Latif how to hit the ball. Beautiful shot. I mean, that is the over they wanted. 4 sixes and a single, and now it's 3 or 5 for 6. So you are very near. So far, it's been a good over from Ziaul Haq. He bowled pretty tight.
slower delivery, slower bouncer, and the catch was taken in the deep. What a good ball by Ziaulak. This young Ziaulak kept his nerves, kept his cool, and bowled that slow bouncer. And Sohail Khan wanted to play it over mid-wicket, mistimed it, and ball went straight to Zohaib Khan, who did not make any mistake this time. Zohaib Khan caught that ball as if his life depended on it. And I think it would have. Had he dropped that catch, I think the other 10 would have killed him. Well played, Sohail Khan. Caught Zohaib Khan in the deep, in the countryside, bowled Ziaul Haq, and Ziaul Haq's experience, his talent, his intelligence, and of course the encouragement from Ahmed Shahzad paying off. Now the interesting thing would be that have they crossed over? This is another interesting point, because Sohail Khan, while hitting the stood there, whereas Khalid Latif wanted him to run. He missed it this time. He wanted to play. They are tired looking, Khalid Latif, I think, and kept this match alive till the last moment. Is going to come into the picture because there is an appeal for a run out. I think they have a strong case. Yes, I think that's a run out. Yes, this wouldn't matter now, because obviously Sindh umpire has given him out because he was out of the crease. So the game is lost by Sindh, but what a fight they have put on. Rumman Rais walks back to the pavilion without having faced a ball. Hassan Khan. Net run rate position. And Ziaul Haq is too talented to allow that. This one's going down towards deep extra cover. Let it go. 4 runs, but that doesn't matter. Congratulations to the Khyber Pakhtunkhwa team. Ahmed Shahzad and his men, they've done a wonderful job here. And this young man, Khalid Latif, has done a tremendous job as well. Cool and Cool presents Higher Pakistan Cup 2016. There's the score. Khurram Manzoor failing today. Sami Aslam also unfortunately run out for 7. Khalid Latif, absolutely brilliant. 168 of 129 deliveries for 8 wickets. The bowling, Ziaul Haq, the pick of the bowlers, 3 for 50. 2 for 37 for young Samin Khan. For Yasir Shah for 67 runs. So this is how it ended. 319 for 6. While batting first, KPK scored an Indian fly. 312 for 8. Sindh. So what a tremendous inning by Khalid Latif. It was a great game of cricket which we have seen here. हायर मैन ऑफ द मैच अवार्ड शेयर करेंगे खालिद लतीफ और अहमद शहजाद के साथ. हायर मैन ऑफ द मैच अवार्ड 25,000 they will receive from Hamid Afridi. 25,000 हायर मैन ऑफ द मैच कैश अवार्ड for both the players.